हेलो एवरीवन हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्ट। रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास और आज की जो हमारी वीडियो इसका टाइटल है इंडिया इज रिक्लेमिंग सुपर पुअर टू सुपर सुपर पावर। पावर, बिल्कुल तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि मतलब इंडिया में जो है पावर्टी काफ़ी ज़्यादा थी पहले और बिल्कुल अभी भी मतलब पावर्टी वहाँ पे है और काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा भी है। लेकिन पिछले 10 to 15 ईयर्स में हाँ जिस तरह इंडिया ने ग्रोथ की और इंडिया बिल्कुल। ने जो है एक पावर की तरफ हाँ मतलब बिल्कुल, एक एक बूस्ट चेंज किया लाए हुआ हैं, है, बिल्कुल बिल्कुल एक चेंज लाया। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि अभी वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाँ ज़्यादा हो बिल्कुल। रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनकी लोकल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हम देखते हैं कि मतलब वो अपने सुपर पुअर से सुपर पावर की तरफ किस हाँ तरह जा बिल्कुल, रहे हमें हैं। ये पता है कि जिस तरह जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वो यहाँ से लेके चले गए थे और बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। तो ये रीजन जो था सब कॉन्टिनेंट का, ये उस टाइम लाइक एक उस तरह बोलते हैं गोल्डन वो था, बर्ड था, और उन्होंने हाँ उसके सारे वो ले लिए थे और फिर वो बहुत पुअर रह गए थे उस टाइम। बट जिस तरह जो है इंडिया साथ साथ उन्होंने फिर ग्रो किया है, लाइक 10 to 15 ईयर्स में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को हाँ मिलती है। उससे पहले भी उन्होंने ग्रो किया है बट रिसेंट 10 to 15 ईयर्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। जिस तरह मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाले प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और जिस तरह हाँ और उन्होंने डिजिटलाइज इंडिया। यूटिलाइज इंडिया, उससे जो है बहुत ज़्यादा इंडिया आगे निकल गया है। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में देखें कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है और किस तरह सुपर पुअर टू सुपर पावर इंडिया चला जाएगा। बिल्कुल, और जितने भी हमारे इंडियन फैंस हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। तो चलो गाइस, वीडियो देखते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स गो। India is going through a massive transformation. The 21st century India is responding to globalization, and this is reflected in its transforming cityscapes. Mumbai, मुंबई तो बिल्कुल। the national capital region. हाँ, मुंबई काफ़ी एडवांस सिटी Kolkata, है। Chennai, वाह, ये मेरे ख्याल में टाटा के वो बिजनेसेस Hyderabad, हुए हैं ना। पता नहीं। Bengaluru. वाह। The change is becoming more and more visible. The country has brought 271 million people out of poverty between the years of 2005 to 2016. हाँ बिल्कुल। Standard Chartered's long-term forecast expects India to become the world's second largest economy by 2030, overtaking the US and becoming second only to China. वाह। It should be noted that India has already become the third largest economy in purchasing power terms, and in nominal terms, it is the sixth largest in the world. वाह। According to the Center for International Development at Harvard University, the economic pole of global growth has moved over the past few years from China to neighboring India, where it is likely to stay over the coming decade. In terms of economic progress, is India becoming the next China? The Beijing-based Chinese think tank, Unbound, thinks so. हाँ According to Unbound, China needs to seriously consider and study the rise of India's economy and India's competitive advantage. India, an ancient land with growing young population, is an emerging market power. It is entirely possible for it to become the next China and poses great attraction to the world's capital. बिल्कुल। The Chinese think tank's apprehensions are not unfounded. Leading international business leaders, think tanks, and global CEOs now consider India as one of the most attractive destinations for investment and technology transactions. What are the conditions that are favoring India? What are the factors that have brought India to the world center stage? What is it that makes India one of the largest growth engines in the world? My name is Carolina Goswami, and in this episode, you will become familiarized a little bit more with the world's largest democracy and the country which is going to play a key role in shaping the future of our planet. India is the #1 offshoring destination in the world, accounting for approximately 55% market share of the global services sourcing business. Indian IT companies have a presence in more than 80 countries, and Indian IT giant TCS is set to become the world's third largest IT services company. TCS। India has the world's third largest startup ecosystem.
It is expected that by 2034, the Indian e-commerce industry will overtake the US to become the second largest e-commerce market. Wow. India already has the second largest telecom network in the world, and it is expected to have a total internet user base of more than 800 million by 2021. India has more than 250 million school-going students, which is more than any other country. The country has become the second largest market for e-learning after the US. A report by Ernst & Young stated that by 2030, the emergence of a robust higher education system would enable India to have more than 20 universities among the global top 200. Global top 200 में. In terms of scientific output, India ranks 5th in the world, and by 2030, it is expected to climb up to 3rd. In 2017, India ranked 1st in the Global Retail Development Index. By 2030, it is set to become the 3rd largest consumer market. The number of operational airports in India will rise to 200 in 2 decades, and by 2024, it will overtake the UK to become the 3rd largest air passenger market. Ports, rail, highways. Ambitious infrastructure projects are rapidly changing the face of India. The country is already building a bullet train infrastructure, and it is also working on the Hyperloop. India's state-of-the-art Train 18, which is a semi-high-speed indigenously built train, has already found many global admirers who have expressed an interest in importing it. India is already creating a web of modern urban metro networks in its big cities. After the completion of Phase 4, the Delhi Metro will become the 3rd largest metro network in the world, with a total length of approximately 450 kilometers. Wow. With more than 7,000 freight trains carrying 3 million tons of freight daily and more than 12,000 passenger trains with 23 million travelers on board every day, the Indian Railways, with its 115,000-kilometer network and more than 7,000 stations, is among the world's largest. Spanning over 5.5 million kilometers, India has the world's second largest road network, and by 2022, the country is expected to have a national highway network of 200,000 kilometers. India is the second largest casting producer in the world. It is also the second largest producer of steel and cement. The construction market in India will grow nearly twice as fast as China up to 2030, and the country is expected to overtake Japan to become the world's 3rd largest construction market by 2021. Wow, Thanks to these solid indicators, there shouldn't be any surprise that the Indian real estate industry is expected to be the 3rd largest in the world by 2030. India is already the 2nd largest mobile phone manufacturer in the world. Wow. It is the 3rd largest producer of coal and 4th largest producer of iron ore. The country is the world's largest cutting and polishing center for diamonds, and in 2017, it exported 75% of the world's polished diamonds. By 2020, it is expected to become the 5th largest manufacturing country in the world. In 2017, India became the 4th largest auto market. It is already the largest manufacturer of two-wheelers and tractors in the world. It is the world's 3rd largest heavy truck manufacturer and 4th largest car producer. By 2020, it is expected to become 4th largest manufacturer of automobiles globally, and the Indian auto components industry is set to become the 3rd largest in the world by 2025. Jaguar, Range Rover and SsangYong Motors are owned by Indian companies. India's national healthcare program, Ayushman Bharat, is the largest government-funded healthcare program in the world. Wow. The country also contributes immensely to global healthcare. India is the top supplier of doctors to both the UK and the USA. Indian hospitals receive nearly 500,000 international patients annually, and medical tourism in the country is expected to touch $8 billion by 2020. It is difficult to imagine how the world would be able to combat AIDS without Indian input. Globally, over 80% of the antiretroviral drugs which are used to combat AIDS are supplied by India. 30% of the annual UNICEF requirement of antiretroviral drugs is supplied by India. Indian drugs are exported to more than 200 countries in the world.
200 Since countries. India is the largest provider of generic drugs globally, it is also known as the pharmacy of the world. 25% of all medicines in the UK are sourced from India. 40% of generic drugs taken by Americans are made in India. And the country's massive pharmaceutical industry is the source of more than 50% of global demand for various vaccines. India's rich culture and spiritual foundational wisdom are its big assets. It is the land which gave birth to pro-environment traditions like aparigraha. It shouldn't be a surprise that India secured the best score in the Green Dex survey and emerged as one of the least wasteful economies. This is a Karbi traditional home. These traditional tribal homes are one of the finest displays of India's rich heritage. They represent a combination of intelligent engineering and sustainable living, which is totally relevant in the 21st century. The Indian state, Sikkim, has become the role model for the entire world in organic farming. It is the world's first 100% organic state. Fruit and vegetable production, tea production, silk production, bamboo genetic resources. India ranks second in the world in all these departments. Wow. In other agricultural commodities like rice, wheat and pulses, it is also among the top producers. With as many as 8,000 species, India is the world's second largest exporter of medicinal plants. It is the world's largest producer of dairy, and globally, India has been the largest milk-producing country since 1997. After the United States, Japan and China, India is the fourth largest producer of agrochemicals. Some of the biggest solar farms of the world are located in India. The Indian renewable energy sector is the fourth most attractive renewable energy market in the world, and the country is well positioned to surpass its 2022 renewable energy target. In Paris, India pledged that by 2030, 40% of its installed capacity will come from renewable sources, and it is expected that by 2050, renewables will supply 75% of electricity in India. Wow. Thorium is considered to be the nuclear fuel of the future, and India has one of the largest shares of global thorium reserves. India is expected to have 30.5 million international tourist arrivals by 2028, but its real potential is a lot more. With 26 biotic provinces, 10 biogeographical zones, more than 30 World Heritage Sites, a 7,000-kilometer coastal line, as well as its mountains, deserts, rainforests, islands, volcano, salt flats, wildlife, and tribal habitation, India is incredibly diversified. Its 29 states, 7 union territories, 4,000 cities, and 600,000 villages have a lot of hidden potential. Many of them are not yet fully explored and discovered. In 2017, India ranked first in the world's first digital traveler rankings when it was revealed that it had the most digitally advanced travelers. There is no denying that India is emerging as a lucrative expat destination. It is the 12th best country to live in as an expat. It is far ahead of countries like the USA, the UK, Japan, and China. India-based expats earn an average of $176,000, which means that they are the second highest paid in the world. On the other hand, Indians who are living outside India have performed exceptionally well and have rightfully earned the tag of moral minority. In both the UK and the USA, the Indian community has been outperforming other ethnic groups academically and economically. India is also the world's top recipient of remittances, as its diaspora sent $79 billion back home in 2018. 79 billion. The country is also expected to benefit from the reverse brain drain. From its film industry to its space agency and defense, India's growth can be seen across a very broad spectrum. In terms of ticket sales and number of films made, India has the world's largest film industry. बिल्कुल. India is a nuclear-armed nation, and its military is the fourth strongest in the world. Its space agency, ISRO, has already reached Mars, and now it is planning to send humans to space.
Through its commercial arm, Antrix, it has launched hundreds of foreign satellites for multiple developed and developing nations. This may all sound very impressive, but for India, this is just a beginning. It wants to attain self-dependence in core technologies, and it wants to participate in the fourth industrial revolution. But will India be able to earn its rightful place in the powerful and influential global forums which are dominated by the Western nations? Will India be able to help those forums become truly global and truly democratic by challenging the existing supremacy of the Western powers? Will India be able to protect its citizens from tech colonization? And will it be able to have a stronger voice in the global media? Will India be able to protect its identity from the Western religious and commercial monocultures which are homogenizing its cultures and diversity? Will it be able to learn the best global practices, and will it be able to preserve the best that it has? Unlike others, will India be able to use its science for global public good and not just for commercial returns? These are the Those who are questions. concerned about India's economic development's impact on the environment should also understand that India's historical emissions are extremely low in comparison to other global powers. Just because the financial prosperity of many developed nations and colonial powers came at the cost to the environment and through the misery of colonized nations, it does not mean that there are no other ways to walk the path to prosperity. Through its approach of universal familyhood, which is rooted in its ancient foundational wisdom, India is practicing what others could only preach. The world should take note of that. See you again. गाइस यहाँ तक थी वीडियो। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लेडी बात कर रही थी, इनकी बातें इस तरह थी बिल्कुल जिस तरह वो इतने सॉफ्ट बोल रही थी, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि उनकी अपनी वॉइस इसी तरह है, या वो इन्होंने वीडियो के लिए इस तरह उसको वो किया हुआ है, वीडियो समझाने के लिए उन्होंने इस तरह यूज किया, लेकिन बहुत हर एक मतलब हार्ट कैचिंग और माइंड को इस तरह कैच कर रही थी उनकी सारे लफ्ज। और उन्होंने बिल्कुल सारी बातें सही की। इंडिया जो है वो एक ग्लोबली रिवोल्यूशनाइज हो रहा है और पूरी दुनिया को वो सुपर पावर बन जाएगा कुछ ही टाइम में। दे कैन ओवरटेक एवरी कंट्री, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी पॉपुलेशन और उनकी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनमें, और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, और वो लर्न कर रहे हैं। सो उससे जो है उनकी पोटेंशियल जो है और इंक्रीज हो जाएगी और वो और अच्छी हो जाएगी। जिस तरह हमने इस वीडियो में देखा तो सारी चीज़ों मतलब जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई थी उसमें या टॉप 5 में आ रहे थे। हाँ, टॉप 5 में बस ये आ रहे थे कि कुछ में थर्ड पे थे, कुछ में फोर्थ पे, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, इस तरह इनको पोजीशन से हर एक चीज़ में। और ज़्यादातर चीज़ों में हमने नोटिस किया कि मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें जिस तरह मतलब अभी रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से उन्होंने बात की, या आईटी के एक्सपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बात की, तो उसमें वो टॉप पर है। और जिस तरह डायमंड पॉलिशिंग हो गई तो उसमें वो टॉप पर थे। तो मतलब जो स्पेशल जो बड़ी बड़ी चीज़ें उस चीज़ों में जो थे वो टॉप में थे, और चीज़ों में भी वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे थे, तो वो भी वो टॉप पे आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो उनकी पोटेंशियल है कि वो और वो यही बता रहे थे कि जहाँ पे वो फोर्थ पे तो वो 2030 तक वो जो है वो सेकंड पे आ सकते हैं, और विद इन फिर 5 to 10 ईयर्स वो फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। और जो उनकी जो मेजर कंपटीशन है वो अब यूएस के साथ नहीं है, उनकी मेजर कंपटीशन अपनी नेबर चाइना के साथ ही है, क्योंकि चाइना ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में जो है यूएस को ओवरटेक कर चुका है। और इंडिया भी जो है ऑन इट्स पाथ है कि वो यूएस को बहुत सारी चीज़ों में ओवरटेक कर जाए। 2030-2035 इन टाइम में वो बिल्कुल हर चीज़ में यूएस को क्रॉस कर जाएगा। तो उनकी कंपटीशन जो होगी वो सिर्फ चाइना के साथ होगी। बट जो आजकल ये जो सिचुएशन चल रहे हैं तो चाइना को भी वो ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और बहुत ज़्यादा वो जो है जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं, और वो जो इंडिया की तरफ जो है चाइना को छोड़ के इंडिया की तरफ आ रहे हैं और इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने इंडिया में अपना काम बना रहे हैं।
تو وہی بات ہے کہ جو بہت لائک انڈیا اگر میں زیادہ اصل ٹائم. ہاں انڈیا میں اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے ہاں نا، بالکل. تو ہر ایک چیز کی مطلب چیک اینڈ ہاں بیلنس بالکل ہر ایک چیز کی ہو سکتی ہے، ججمنٹ اس کی بہت ایزیلی ہو سکتی ہے، بالکل. ہم لوگوں نے جو اس میں دیکھا اور تھا اس وہ وجہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ٹاپ ہو تھنگز رہی ویئر ہے۔ انڈیا از ورلڈ لیڈر پارٹ 3 میں ہمیں دیکھا تھا کہ 7 منٹس میں گفٹ سٹی میں جو ہے ہاں ورلڈ بینک 7 نے مائکرو سیکنڈ 7 منٹس میں مائکرو سیکنڈ میں تو وہ تھا اسٹاک ٹریڈ. نہیں ایکسچینج، نہیں، ورلڈ بینک نے جو اپنا وہ ہاں لگایا تھا بالکل 7 بالکل، منٹس ہاں کے اندر جو 7 تھا، منٹس کے سارا اپنا بزنس سیٹ سارا اپ اپنا بزنس انہوں وہ نے 7 منٹس کے اندر گفٹ سٹی کے اندر سیٹ اپ بنا لیا تھا. تو دیٹ ہاں واز ریئلی امیزنگ. 7 منٹس میں لوگوں کے ایئرز لگ جاتے ہیں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ 7 منٹس میں بزنس سیٹ اپ بزنس کر آپ سکتے سیٹ ہیں اپ آپ. کر سکتے تو ہیں، وہاں تو اگر آپ کو اتنی زیادہ فیسلٹیز مل رہی ہیں اور اتنی زیادہ آپ آسانی سے بزنس سیٹ اپ کر بزنس سکتے ہیں، کر سکتے ہیں تو بالکل۔ کیوں نہیں انویسٹر وہاں پر آئیں گے اور وہ وہاں پر انویسٹمنٹس کریں گے. بالکل تو یہ والی ویڈیو تو ہمیں کافی اچھی لگی اور بالکل بہت زبردست انفارمیشن اس میں تھی انڈیا کے حوالے سے، بالکل. اور اگر انڈیا اپنے اس کے ساتھ اتنے سنسیئر ہے ہاں ڈیولپمنٹ کے بالکل، ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب انڈیا جو ہے وہ اور بھی اور گرو بھی کرے آگے اس جائیں. میں۔ ہاں بالکل. تو گائس یہاں تک تھی ہماری ویڈیو، اور یہاں تک تھا ہمارا ریئیکشن. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہمارا ریئیکشن اچھا لگا، تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور بالکل سبسکرائب کریں. ضرور، اور اگر اس طرح اور ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو انڈیا کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جس میں انٹرنیشنل اسپیکنگ کی گئی ہو اس پہ، بالکل تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اس پر ہم ہم ضرور ضرور ایڈ ایڈ کریں گے. کریں گے۔ تو تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ گڈ گڈ بائے. بائے۔